Hello and welcome to your English language class. Today in this class we'll be taking up yet another fiction from your supplementary reader Moments. The title of this fiction is The Beggar, written by Anton Chekhov. Now talking about the author, Anton Chekhov was a Russian playwright and short story writer who is considered to be among the greatest writers of short fiction in history. His career as a playwright produced 4 classics, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. Now, this story by Anton Chekhov is the story of transformation of a beggar into a civilized human being. Lashkov, the beggar, earned a little by telling lies and thus evoking sympathy in his listeners. One day he is discovered by Sergei, who does not give him alms but offers to give him work. Lashkov thus gets employed for some menial works, and years later, when Sergei comes across Lashkov, who is no longer a beggar but a respectable notary, Sergei feels satisfied that his kindness had transformed the life of a beggar. But he learns from Lashkov that the transformation was not caused by his kindness but by his sour-mouthed cook, who did all the work for him, cursing him side by side. Her words had a deep lasting impression upon him, and he decided to change his ways. Now this was the overview of the story which we are about to read now. Okay, so here's the story, The Beggar. What induced the beggar Lashkov to change his ways? Let's read and find out. So, what actually inspired the beggar Lashkov to change his lifestyle and transform into a better human being? Kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. Now, this beggar Lashkov was standing on the street and he was begging all the passers-by. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks. Now kopecks is the Russian currency. So he's saying that I don't even have 5 kopecks for a lodging. Okay. The rent which he's supposed to pay to stay in a place, in a rented place, he doesn't even have that much money with him right now. I swear it before God. So he says that I'm ready to take an oath, but I don't even have that much money. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. Intrigues means tricks. So he claims that for 8 long years he was a village school teacher, but he lost his place, he lost his job because of some tricks played by people out there in the school. I fell a victim to calumny. Calumny means defamatory statements, or you can say false allegations made by maybe his colleagues or some other people. It is a year now since I've had anything to do. So from last 1 year he is jobless and he doesn't have any job and no money with him. The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant. Suppliant here is the applicant. At his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. So now this passerby, the advocate Sergei, he just looked at him very keenly, and he remembered him that he must have seen this man before. So उसको कहीं ना कहीं याद आता है कि मैं इस आदमी से पहले मिल चुका हूँ. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. अब वो जो mendicant means beggar. जो beggar है वो अभी भी he is telling all kind of stories कि मुझे एक job offer मिली थी in the province of Kaluga. The place was named Kaluga, but I haven't the money to get there. लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं that I can travel there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. कि मुझे मांगते हुए आपसे बहुत शर्म आ रही है,
लेकिन मैं अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनकी वजह से मैं काफ़ी मजबूर हूँ. Now Sargai's eyes fell on the man's overshoes. Overshoes means shoes bigger in size. Okay. So one of which was high and the other low. And he suddenly remembered something. अब वो जैसे उसके शूज़ को देखता है तो वो ओवर साइज शूज़ होते हैं, और एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, और तभी उसको कुछ याद आता है सरगाई को. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadoya street, he said. But you told me then that you were a student who had been expelled, not a village school teacher. Do you remember? अब इसको अचानक याद आता है सरगाई को कि day before yesterday the same man was claiming that he has been expelled from the school, village school, and now he is claiming that he was the village school teacher. No, no, that can't be so, mumbled the beggar, taken back. अब वो जो बेगर होता है वो काफ़ी शॉक्ड होता है और वो डिनाई करता है उस चीज़ को. नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. अब वो जो बेगर है वो अपनी बात को ऊपर रखता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको कुछ मिस्टेक हुई है. आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड आई कैन शो यू माई डॉक्यूमेंट्स इफ़ यू वांट फॉर वेरिफिकेशन. Have done with lying. You called yourself a student and even told me that you had been expelled for. Don't you remember? वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, और अभी कुछ दिन एक दिन पहले ही तुमने मुझे बोला था that you are a school student and you've been expelled for some reason. Sargai flushed. Flushed means he turned red with anger and turned from the ragged creature with an expression of disgust. अब उसको जो झूठ बोलने वाले लोगों से मे भी काफ़ी ज़्यादा नफ़रत होगी, तो वो एकदम से गुस्से में लाल होके वहाँ से एकदम उसको एक उसके फेस पर एक एक्सप्रेशन था ऑफ डिस्गस्ट, ऑफ डिसलाइक, एंड ही जस्ट टर्न्ड अवे फ्रॉम द बेगर. ओके, दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रिली. दिस इज स्विंडलिंग. स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग. I shall send the police for you, damn you. अब जब बेगर को लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई, उसका झूठ पकड़ा गया, तो वो उसी एडवोकेट पर ब्लेम लगाने लग जाता है कि यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट एंड यू आर चीटिंग मी, और मैं कॉप्स को तुम्हारे पीछे भेजूंगा. ओके, और उसको कर्ज करना शुरू कर देता है वो. Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I'm neither a student nor a school teacher. All that was fiction. अब वो फिर एक नई एक स्टोरी बना के लाता है कि अपने दिल पे हाथ रख के वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं झूठ बोल रहा था, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना मैं कोई स्कूल टीचर हूँ. वो सब एक इमेजिनेशन थी. फिक्शन हियर इज इमेजिनेशन. फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कॉयर. कॉयर मीन्स ग्रुप ऑफ सिंगर्स. ठीक है, तो वो कहता है कि मैं एक रशियन कॉयर में आई यूज्ड टू सिंग एंड वाज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस. I was addicted to alcohol, so I was thrown out of that Russian choir. But what else can I do? I can't get along without lying. लेकिन मैं I can't help it and I cannot live without lying. Okay. So झूठ बोले बिना वो नहीं रह सकता था. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? और वो कहता है कि जब भी मैं सच बोलता हूँ तो कोई भी मुझे हेल्प नहीं करता है. कोई भी जो भी मैं कुछ भी उनसे डिमांड करता हूँ या कोई भी थोड़ी बहुत हेल्प की उम्मीद रखता हूँ तो कोई भी हेल्प नहीं करता है मेरी. इफ़ आई टेल देम द ट्रुथ. What can you do? You ask what can you do? cried सारगाई coming close to him. अब सारगाई को और ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो काफ़ी मेहनती होता है, काफ़ी हार्ड वर्किंग होता है. तो जैसे ही वो ये क्वेश्चन सुनता है व्हाट कैन यू डू, तो उसको गुस्सा आ जाता है. तो वो कहता है व्हाट कैन यू डू? वर्क. दैट्स व्हाट यू कैन डू. यू मस्ट वर्क. वो कहता है क्या कर सकते हो? तुम काम कर सकते हो. कोई भी काम, छोटा बड़ा कैसा भी, तुम्हें काम करना चाहिए. वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क. वो कहता है हाँ मुझे भी पता है कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ ढूंढूँ काम को. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. अब वो कहता है कि ओके फाइन, आई विल हायर यू टू चॉप वुड फॉर मी. I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread.
अब वो फिर बहाने बनाने लगता है. He started giving excuses that nowadays even woodcutters are jobless and they don't have much work to do. Will you come and chop wood for me? अब वो कहता है okay fine, I will hire you. You just come along with me and I will give you some work. Okay, you just chop wood for me. Yes sir, I will. Very well, we'll soon find out. Sargai hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. अब सारगई उसको जल्दी से अपने ऐसे हाथ मलते हुए उसको लेकर जाता है अपने घर और अपनी जो कुक होती है उसको बाहर बुलाता है. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. अब वो जो उसकी फीमेल कुक होती है उसको आवाज़ दे के बुलाता है. Olga, you just take this man along and show him the woodshed where he'll be chopping wood from today onwards. The scarecrow of a beggar, वो एकदम दुबला पतला एकदम लीन स्किनी मैन होता है. So he just shrugged his shoulders as if in perplexity. अब वो एकदम confused state of mind में होता है and went irresolutely after the cook. और वो एकदम hesitantly उसके पीछे पीछे जाता है उस कुक के. It was obvious from the gate. Gate means walk. You can make out from the way he was walking that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. अब वो जिस तरीके से चल रहा था लग नहीं रहा था कि वो एक्चुअली वर्क करना चाहता है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े जो उसने बोल दिए होते हैं कि हाँ मैं कोई भी काम कर सकता हूँ और आई एम नॉट मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, ठीक है, मैं वर्क श्रेक नहीं करता हूँ. आई लव टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इफ गिवन टू मी, बट लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. तो ऐसे करके जो भी उसने स्टोरीज बनाई होती हैं अब वो उसी के अगेंस्ट, वो जो भी वर्ड्स उसके होते हैं वो उसी के अगेंस्ट दे आर वर्किंग नाउ. इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल. अब वो अल्कोहलिक होता है और उसने इतने दिनों से कोई काम भी नहीं किया होता है. उसकी लाइफ जो है भीख मांग के चल रही होती है, किसी भी तरीके से इधर उधर से वो खाने पीने का इंतज़ाम करके. ही वॉज जस्ट लिविंग हिज लाइफ विदाउट डूइंग एनी वर्क. ओके, सो he did not feel any inclination means willingness, so there was no willingness to work hard in this beggar. Sergei hurried into the dining room. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. अब सारगाई जो है जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में जाते हैं और वहाँ से उसकी खिड़की में से वो जो वुड शेड होता है वो क्लियरली दिखाई देता है. तो वहाँ जाके वो देखते हैं कि अब ये क्या करेगा, क्या ये एक्चुअली में काम करेगा, व्हाट हिज इंटेंशंस आर. तो टू जज हिज इंटेंशंस ही जस्ट वेंट एंड स्टूड देयर नियर द विंडो, ओके, इन द डाइनिंग रूम, एंड ही स्टार्टेड लुकिंग आउट. ओके, ऑल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली. ऑल्गा जो है, जो कुक थी, शी वॉज स्टेयरिंग एंग्रीली एट हर कंपेनियन. जो उसके साथ गया था, कौन गया था उसके साथ, बेगर लश्कॉफ. तो वो बड़े उसको एकदम गुस्से से उसको देख रही होती है. शोव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और वो उसको ऐसे कोहनी से पुश करती है. अनलॉक द शेड एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और वो जल्दी से उस वुड शेड का जो दरवाज़ा होता है उसको खोलती है और वापस उसको जब अंदर पुश करके और बैंग कर देती है, एकदम बंद कर देती, स्लैम कर देती है डोर को. ओके, so I hope you've understood till now. The rest of it we'll be taking in the next class. So just read this chapter and thank you for watching this video.